Today we will start with our next topic, which is acceleration analysis. Okay, we will cover the part A of the acceleration analysis. So this is actually the continuation of the kinematic analysis which we started few weeks earlier. So these are the contents which we are going to cover today. So we will start with the introduction to acceleration analysis, and then we will see the definition of acceleration as far as the kinematic analysis is concerned. Then we will go to the graphical acceleration analysis, which is one of the method to carry out the kinematic analysis, and in the end we will shift to the analytical method of acceleration analysis using the vector loop method. So depending upon the time, we will see how many mechanisms we can cover in vector loop method. So at least we will cover the 4-bar pin jointed mechanism. Once again, it depends on the discussion, on the time which will be consumed on these topics. Okay ji, so we in the kinematic analysis we already done with the position analysis. ठीक है, so हमने जब position analysis कर लिया, so what data we have now? We have theta 3 and theta 4. I'm talking about 4-bar pin jointed mechanism at this point of time. So we already done the velocity analysis. So after velocity analysis, what we have? We have omega 3, omega 4, which are the angular velocities of link 3 and link 4. And we have VA, VB and VC, which are the joints and coupler points. ठीक है जी, ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है. So now what is the next step? The next step is to determine the acceleration of all the links and point of interest. Once again, I'm saying the point of interest are the pin joints as well as some other points, for example the coupler point, which can be of interest. ठीक है, जिसमें से आपने जिस पॉइंट से आपने आउटपुट लेना हो या फिर जो पॉइंट आपके लिए basically helpful हो या critical हो. So we have to calculate the linear acceleration at that point. ठीक है जी. So ये सारा प्रोसेस करने का मकसद क्या है? So that we can determine the dynamic forces using the formula F is equal to ma. So where F is force, m is masses and a is the acceleration. So we are calculating the accelerations. So what is the purpose of calculating dynamic forces? The purpose is to determine the dynamic stresses, because if we know the dynamic stresses when the mechanism is in motion, then we can compare that stress level, instantaneous stress level, with the yield strength of the links. ठीक है, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि स्ट्रेसेस जो हैं stresses are going beyond the yield strength, because if this happens the links will be deformed permanently and the mechanism will not be able to perform the role which is supposed to perform. ठीक है जी. ओके जी. सो वंस अगेन, जैसे हमने वेलोसिटी एनालिसिस में देखा था, पोजीशन एनालिसिस में देखा था, वी हैव टू मेथड्स टू परफॉर्म द एक्सेलरेशन एनालिसिस. द फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड, द अदर वन इज द वेक्टर लूप मेथड. ठीक है, तो ये दोनों मेथड आज हम कवर करेंगे. वेक्टर लूप मेथड में we will apply the vector loop method, which is also known as analytical method, to those 5 mechanisms, which are pin jointed crank slider, slider crank, inverted crank slider and the geared 5-bar mechanism. So we will start with the definition of acceleration. So acceleration is what? That is the rate of change of velocity with respect to time, and we know that it is a vector quantity. ठीक है जी. Vector quantity, because if we are talking about the acceleration, angular acceleration, then of course it's a vector quantity. If we are talking about linear, still we need the magnitude as well as direction. ठीक है जी. So acceleration similar to velocity, we can have two type of accelerations. One is the angular acceleration, the other one is the linear acceleration. तो जो angular acceleration है उसको हम denote करते हैं with the letter alpha, whereas we will denote the linear acceleration with the capital A. So these are the formulas for the angular acceleration and linear acceleration. Angular acceleration is basically the time rate of change of angular velocity. This is the angular acceleration, and that is the time rate of change of velocity, whereas linear acceleration is time rate of change of linear velocity, dv by dt.
So now we'll shift to the graphical method. So this is the mechanism. This is not a mechanism. This is just one link. ठीक है जी, हमारे पास लिंक है AP, ठीक है, जो कि बेसिकली पिन जॉइंटेड है. सो इट इज इन प्योर रोटेशन. ठीक है जी. तो दिस इज द लिंक विच वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज अ लिंक AP and this is in pure rotation. So what data we have? We have the angular displacement of that link available, which is theta, number one. Number two, we have the direction of what? Angular velocity available, which is omega 2. So this, what is the purpose of this negative sign? नेगेटिव साइन का पर्पस बेसिकली ये नहीं है कि बिकॉज दिस इज द एंगुलर velocity in the clockwise direction, that's why we're putting the negative sign, but this is because the angular acceleration is decreasing. Oh sorry, angular velocity is decreasing. इसको हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे. ठीक है जी. so far we have the angular velocity, the direction of angular velocity available. We have the direction of angular acceleration available, and we have the direction of linear velocity available, because this is something which we calculated in the previous part of the kinematic analysis. ठीक है, velocity analysis में हम ये जो वेक्टर VPA है इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है जी. तो इट मीन्स कि एक्सेलेरेशन एनालिसिस के लिए जो गिवन होगा आपको, ठीक है, दैट शुड बी द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द इनपुट लिंक. इसके अलावा हमें जो चीज़ें मालूम है काइनेमेटिक एनालिसिस में, वो पोजीशन एनालिसिस का डाटा है, वेलोसिटी एनालिसिस का डाटा है, प्लस लिंक की लेंथ्स हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है हमें. एंड the additional information which we need for the start of the kinematic analysis, as far as the acceleration is concerned, is the angular acceleration of इनपुट लिंक विच इज लिंक टू. ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें गिवन है अल्फा 2 की फॉर्म में, अल्फा 2 इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है जी, दैट इज पॉजिटिव, नंबर वन. ठीक है, ओके. सो once again we will start with what? We will start with the position vector equation, which is RPA is equal to P e raised to power j theta, where P is what? P is the length of this vector or this link, and theta is the angular displacement of this link. ठीक है जी. So ये हमने क्या किया था previous step में, previous lecture में, we took the time derivative of this one and we have this equation. So this is the velocity equation. So in order to get the acceleration, what we have to do? We have to take the time derivative of this velocity equation. ठीक है जी. इसका time derivative लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? We will get the acceleration. So इस equation में देखिएगा, how many variables do we have which are changing with respect to time? So we have two variables in this equation. Number one is the omega and the other one is the theta. It means we have two variables which are changing with respect to time, and those are the angular displacement and angular velocity. It means now we have to use the product rule of differentiation in order to get the acceleration equation. ठीक है जी. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था? ये हमारे पास velocity है, दिस इज द velocity term, and we have to take the time derivative of that one. ठीक है, in order to get what? In order to get the acceleration of point P with respect to A. We can call it AP as well, because A is the origin, so there is no need to mention A in the subscript. ठीक है, अगर मेंशन करना चाहें that's fine, but अगर आप इसको स्किप भी कर दें, still the meaning will remain the same. अच्छा जी. सो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. नंबर वन इज द ओमेगा, द अदर वन इज द थीटा. तो इसका जब हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू डिफरेंशिएशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन? वी विल हैव फर्स्ट टर्म को देखिएगा. फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया है? वी आर सपोजिंग दैट दिस वन इज अ कांस्टेंट. ठीक है, दिस वन इज नॉट चेंजिंग एंड दिस ओमेगा इज चेंजिंग. तो उसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे व्हाट विल हैपन? वी विल हैव j, वी विल हैव p, वी विल हैव e raised to j theta, or this omega will differentiate with respect to time. So this is the first term. The second term में हम क्या assume करेंगे? That omega is not changing and this theta is changing. So what will happen? We will have j, we will have p, we will have omega, and we will have this term as it is, and then we will take the derivative of this angular displacement. So we have this one. So in the next step we will replace this time derivative of angular velocity with angular displacement. We know that
d by dt of omega is equal to alpha, which is angular acceleration. And we know that this d by dt of theta, which is angular displacement, is what? That is omega. So we have omega here, we have omega here. So what will happen? That will become the omega square. ठीक है जी. And what about this negative sign? ये negative sign कहाँ से है? Because we have j और iota available here, we have iota available here. जब इसका square लेंगे तो what will happen? We will have a negative sign. So these are the two terms which we get after differentiating this velocity equation with respect to time. So these are the two terms, and we call this term which involves the alpha or angular acceleration the tangential component of the acceleration, whereas the other term which involves the angular velocity, we call it normal component of the acceleration. इसको normal भी कह सकते हैं और इसको centripetal acceleration भी कह सकते हैं. So now we will shift to this diagram. So ये हमारे पास ये directions कैसे हैं. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं this normal component. दिस नॉर्मल कंपोनेंट. ठीक है जी. अच्छा, नॉर्मल कंपोनेंट जो है, डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या? फ्रॉम ए टू पी. ठीक है. और जो आपका सेंट्रीपिटल वेक्टर होगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, दैट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री फेज शिफ्टेड फ्रॉम द वेक्टर ऑफ पोजीशन. So that's why it will be directed towards the pivot. So this is the direction of normal component of acceleration. So what about the direction of the tangential component? So this one depends on the rate of change of angular velocity. ठीक है जी. So if we have the rate of change of angular velocity positive, अगर तो एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव है, so what will happen? The direction of tangential component of acceleration will be in the same direction in which we have the vector of angular velocity. ठीक है. अगर तो rate of change of velocity is positive. ठीक है. If the rate of change of velocity is negative, ठीक है, what will happen? The direction of tangential component of acceleration will be opposite to the direction of angular velocity. ठीक है जी. ये चीज आपने माइंड में रखनी. So by looking at this diagram we can clearly see that the rate of change of angular velocity is negative. That's why we are getting what? We are getting the negative direction of this tangential कंपोनेंट. सो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सो ये डिपेंड करेगा बेसिकली अल्फा 2 की वैल्यू पे और इसकी डायरेक्शन पे. ठीक है जी. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग द अल्फा 2 वैल्यू ऑफ लेट्स से 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव, सो इट मींस व्हाट? इट मींस दैट यू हैव टू टेक इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है जी. अपवर्ड डायरेक्शन. और अगर आपके पास ये नेगेटिव है तो इट मींस यू हैव टू टेक इट इन द लोअर डायरेक्शन. ठीक है. सो जो क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे, सो दिस थिंग्स विल बी मोर क्लियर. ठीक है जी. सो एंड व्हाट अबाउट दिस वन, एपीए? एपीए इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ these two vectors. If we add these two components of acceleration, which are tangential component and the normal component, what we will get? We will get this APA, which is the resultant vector of this point P. So this is the acceleration analysis for a system in which we have two links. One is the slider A. This is a slider which is sliding along x-axis, whereas we have another link which is this AP, this link which is in pure rotation. ठीक है. So now ये जो link है, now this link will translate as well as rotate. The translation of this link is because of the translation of this link or slider A. ठीक है जी. So हम अब इस पे हमने जो है अप्लाई करना है एक्सेलरेशन एनालिसिस को. So once again the data which we have is theta, omega 2 and alpha 2. ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि that tangential component of
acceleration is what? That is r alpha, whereas normal component is r omega square. ये r क्या चीज होगी? r is the basically the length of the position vector, ठीक है, और the length or the radius of the circle along which the link is rotating, ठीक है. प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं दिखा सकूं आपको, सो दिस दिस वन, ठीक है. सो ये ई पर जे थीटा की टर्म को अगर आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इग्नोर कर दें तो व्हाट विल हैपन? द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगुलर acceleration, whereas normal component is equal to what? Is equal to magnitude of the vector multiply by square of angular velocity, ठीक है जी. So these are the two components of acceleration, tangential and normal component. Normal component is also known as the centripetal component of the acceleration. So this is the equation which we are using right from the position analysis, which is a of p is equal to a of point A and acceleration of point P with respect to point A. So this is equation, we will use it for the acceleration as well. ओके, सो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? नाउ वी विल पुट व्हाट? वी विल पुट द कंपोनेंट्स ऑफ दीज एक्सेलरेशंस. सो पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट and the sum of tangential component and the normal component. Same is the case for the acceleration of point A and acceleration of point P with respect to A. तो ये हमने क्या कर दिया? इस इक्वेशन में इनके कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया. ओके जी, सो व्हाट वी नीड, हमें चाहिए क्या? वी नीड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, ठीक है, विच इज द सम ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A and acceleration of point P with respect to A. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो पॉइंट A है इसके एक्सेलरेशन को देखते हैं. सिंस दिस पॉइंट A इज इन प्योर इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका सिर्फ ये बेसिकली क्या है? ये लीनियर डायरेक्शन में, तो इसका बेसिकली क्या होगा? इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा विच इज ए. इट मींस, और ये कंपोनेंट क्या होगा? दैट इज बेसिकली द टेंजेंशियल कंपोनेंट. नॉर्मल कंपोनेंट इसका कोई नहीं है, ठीक है जी. तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल ए एक ड्रॉ कर लेंगे. सो नाउ वी हैव टू ऐड ए पी ए इंटू ए. सो ए पी ए के दो कंपोनेंट्स हैं विच आर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स. ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे पास किस तरह से आ जाएंगे? नॉर्मल कंपोनेंट हमें पता है दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर. इट मींस इट विल लाई इनवर्ड. और इसका मैग्नीट्यूड कहां से निकाल लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे. Since we have omega 2 available, since we have the length of the link available, so we can calculate the magnitude, and direction is towards the pivot or opposite to the direction of position vector. So what about this magnitude of tangential component? That is equal to the link length, which is once again AP multiplied by alpha. Alpha is what? The angular acceleration of the link which is given. So we have the magnitude of these two components available, ठीक है जी, as well as directions. हमें इसकी डायरेक्शन भी पता है, इनकी मैग्नीट्यूड भी पता है. सो वी कैन ड्रॉ देम. हमने क्या किया? ए के अंदर ऐड कर दिया व्हाट? APAT एंड APAN, ठीक है. तो ये दो वेक्टर्स ऐड कर दिए. सो नाउ द रिजल्टेंट विल बी AP which will start from the tail of the first and will end at the head of the last. So this is AP and we will draw it at point P. So this is the basically acceleration analysis of a link which is sliding as well as rotating. So now we have the acceleration at point P, which is the sum of acceleration of point A and acceleration of point P with respect to A. So this is another system. So in this system what we have two automobiles, ठीक है. We have two cars, out of which the one car, which is car A, is moving in the positive x direction, ठीक है, but its velocity is changing in such a way that rate of change of velocity is negative. So it means the acceleration will be in the opposite direction to the velocity, or you can say that this body is decelerating, number one. Achha, so what about this body P? This body P is moving in a path, ठीक है,
since we have two components available, ठीक है, or you can say that since we don't know about the exact path of motion, so what we have to do, we have to calculate the component of this body first. So ये हमारे पास क्या है, so since we want the difference or the relative acceleration of body P with respect to A, so the first step is what? The first step is to calculate the normal and tangential component of what? Of this body. ठीक है जी, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है. ओके, सो वो मालूम करने के लिए क्या तरीकेकार है? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw the tangential component of this body, so which will be in the same direction. चूंकि ये same direction में draw हुआ है, it means कि velocity, the rate of change of velocity is positive. That's why this uh, tangential component of point P is in the same direction as of velocity of point P. दोनों की direction same है, ठीक है. So the other component is always at 90 degree with respect to the tangential component. So what we'll have, we will have this APN drawn at 90 degree with respect to this APT. तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे. इनका रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट करें, so that will be AP. So now we are interested in the difference in the acceleration of two bodies. So we are assuming that the acceleration of body P is greater as compared to the acceleration of body A. So what will happen? We have to use the same equation, which is APA is equal to AP minus AA. The same equation which we used in the last slide. So it means what we have to do? We have to subtract this vector from this vector. ठीक है? We have to subtract this vector from this vector. This is the absolute acceleration of body A, this is the absolute acceleration of body P, and we want the relative acceleration of body A with respect to P. ठीक है जी. So we will what we will do, we will draw this vector first, which is the AP, and then what we will do, we will subtract this vector from this one. अगर ये आप इसको ऐसे ना भी ड्रॉ करें, अगर आप इसको ए को यहाँ पे भी ड्रॉ करें, ठीक है, तो स्टिल वी विल गेट दी सेम एपीए. ठीक है, एपीए की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विल स्टिल रिमेन द सेम. इन्होंने क्या किया है स्लाइड में, बेसिकली we are taking the negative of this vector first, and then we are adding AP in that one using the head to tail rule, and then we are getting the resultant of this system by joining the tail of the first and head of the last vector. So this is the equation which I was talking about, which is APA is equal to AP minus AA. So this is the acceleration of point P with respect to A, or we can say that this is AP minus AA. ठीक है जी. तो ये यूज करते हुए ये जो सिस्टम पिछला सिस्टम था, that is the resultant acceleration of point P, whereas this one is acceleration of point P with respect to A. ठीक है जी, दोनों में difference है. Okay, so since we have the basics covered, basics of acceleration analysis covered, so now we can move towards what? Now we can move towards the acceleration analysis of a 4-bar pin jointed mechanism. ठीक है जी. So this is the same mechanism which we are considering from last few weeks. ठीक है, और इसी mechanism पे हमने graphical analysis perform किया था for position and for velocity. ठीक है जी. तो अब इसी mechanism पे हम acceleration analysis को perform करेंगे. तो this is the system which we are talking about. इसमें हमारे पास क्या है, we have, इसकी notation आपको पता है, this is the link 1, this is 2, this is 3 and this is link 4. And what data we have omega 2 available, we have theta 2 available, we have alpha 2 available. ठीक है, plus we already performed the position analysis and acceleration analysis. So now we want to determine what? There are total 5 unknowns in this system as far as acceleration is concerned. 5 हमारे पास unknowns हैं जो कि हमने basically find out करने using the graphical method. Okay, so what are the knowns? We have
small a available, we have small b available, we have small c, we have small d available, we have theta 2 available, we have alpha 2 available, we have omega 2 available, plus we have the angular displacement of link 3, link 4 available, plus we have the angular velocities of link 3 and link 4 available, plus we have the linear velocities of point A, point B and point C available. ठीक है जी, ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है. एंड नाउ वी विल सी हाउ वी कैन डिटरमिन द acceleration unknowns. ठीक, okay, so once again the rule is we will start from the link or from the side which has for which we have the maximum information available. So that one is link 2, because for link to what we have angular displacement available, we have angular velocity available, and we have this angular acceleration available. So quite easily we can use these equations which we derived or which we see in the previous slides. Okay, this one is for the tangential component of acceleration and this is for the normal component of the acceleration. So in equations को use करते हुए what we can do, we can find out the magnitudes of normal acceleration component of point A and tangential acceleration component of point A. ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएंगे. डायरेक्शंस वी कैन इजीली फाइंड आउट डिपेंडिंग अपॉन दिस डायरेक्शन ऑफ alpha 2. So if alpha 2 is in clockwise direction, so this tangential component of acceleration of point A will be rightward. ठीक है, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो ये leftward act करता. So what about the normal component of acceleration of point A? That will act in the opposite direction to the position vector of this link. ठीक है जी. So now what we have these two components of acceleration available. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है और इसकी डायरेक्शन भी पता है. So it means we are done with one thing, which is we have the value of one unknown which is the acceleration of point A. तो इसका रिजल्टेंट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, we will have the magnitude. ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं using head to tail rule. ओके जी, what else? अब हमें क्या करना है? So now we will move to point B. अच्छा, सो पॉइंट बी, मैं एब्सोल्यूट पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू दिस पिवट O4. ठीक है जी. सो इस एक्सेलेरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे. वो कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? वन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, द अदर वन इज द नॉर्मल और सेंट्रीपिटल. अच्छा, as far as the directions are concerned, we know the direction of this one because this is always directed opposite to the position vector. So the position vector is this in direction from O4 to B. So what will be the direction of this ABN? That will be opposite to O4B, which is from B towards O4. So this is the direction of normal component of acceleration of point B. अच्छा, so we have another information available कि ये जो point B पे acceleration है, इसका जो second component है, tangential component है, that will be perpendicular to this link. So हम क्या कर सकते हैं? We have a line PP available. ठीक है, तो it means कि जो ABT है, that will lie on this line. अभी हमें ये नहीं पता कि ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, ये ABT is still unknown. We don't know the direction, we don't know the magnitude of this ABT. ये हमें अभी मालूम नहीं है. ठीक है, प्लस हमें ये भी मालूम नहीं है, आई एम नॉट श्योर, we can have the magnitude of this one available. ठीक है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए what we need the length of the link and we need the angular velocity. Since we carry out the velocity analysis first, it means we have the value of omega 4 available. So using omega 4 square multiplied by the link length, ठीक है, which is O4B, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? We can calculate or we can find out what? We can find out the magnitude of this vector. So we have the magnitude of this vector available, we have the direction of this vector available. ठीक है जी, तो ये हमारे पास available. But for this one ATB, we don't have alpha 4 available.
सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। इन दोनों में हमें क्या मालूम है? वी नो द डायरेक्शन, वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट, एंड वी पार्शियली नो द डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द other point which is ABA. Okay, we are talking about this position vector, that is the acceleration of point B with respect to A. so so इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड द अदर वन इज द नॉर्मल कंपोनेंट। जो नॉर्मल कंपोनेंट है दैट विल एक्ट इन द opposite direction to the position vector. The position vector is directed from A to B, so the acceleration vector or the normal component of the acceleration will act from point B towards point A. ठीक हो गया जी? ये हमारे पास अवेलेबल है, इसकी डायरेक्शन अवेलेबल है। सो हमारे पास का मैग्नीट्यूड अवेलेबल है क्या? We don't have the magnitude of this one, or we can find out. We can find out the magnitude because using this equation. Since we know the angular velocity of this link, which is link 3, and since we know this position vector or length or magnitude of this link AB, we can easily find out the magnitude of normal component of acceleration of point B with respect to A. So we have the direction and we have the magnitude of this vector available. ठीक है, तो इसी तरह जो ये आपके पास एक्सेलेरेशन ऑफ point B with respect to A है, इसका other component will act at a line which is perpendicular to this position vector or this acceleration vector. इसके perpendicular act करेगा along the line QQ. ठीक है, इस लाइन के along act करेगा। ठीक है, so but we don't know the magnitude of this one. ठीक है, and we partially know the direction of this vector ATBA. so दोबारा से इस इक्वेशन पे आते हैं। so what we have all the information available as far as these two acceleration components are concerned. ठीक है, and then we have the information available about what? We know the information about the normal components A and BA और A and B, इन दोनों के हमें पोजिशन मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस पता। ठीक है, अगर हम बात करें ATB और ATBA की, तो इसकी हमें पार्शियल डायरेक्शन पता है, मींस लाइन ऑफ एक्शन पता है, बट वी डोंट नो what we know the exact direction and we don't know the exact direction and we don't know the magnitude of these vectors. ठीक है जी, it means we have how many unknowns? We have 4 unknowns. ठीक है, so we have 6 parameters और हर पैरामीटर के अगेंस्ट दो सब पैरामीटर्स हैं, मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। so out of 12 parameters we know 8 parameters. ठीक है जी, so once again we will shift to the head to tail rule to find out the unknowns. ठीक है, जो unknowns हमें find out करने हैं, those are the tangential components, the magnitude and the direction of tangential components of point B and point B with respect to A. okay जी, start करते हैं। ओके, सो व्हाट्स दिस वन? ये कौन सा वेक्टर है जी? ये जो ड्रॉ हुआ है सबसे पहले, ये वाला हमने कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, सो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट। ओके, दिस वन इज आल्सो ड्रॉन। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं? इसका हम निकाल सकते हैं बेसिकली रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट। हम सिर्फ इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं या इन दोनों को भी ड्रॉ कर सकते हैं या सिर्फ इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज सेम। okay, so now we have this one drawn and we have this one. ये दो चीजें हमने ड्रॉ कर ली। so now what we have to do? We have to add these 4 parameters or these 2 parameters, sorry. तो इसके बाद हमने क्या कर दिया? what's this one? this is ABAN, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये ड्रॉ हो गया, ऐड हो गया बेसिकली। और अब ये देखिएगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया। What about this one? ये हम ड्रॉ कर सकते हैं? ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द डायरेक्शन। तो हमने क्या किया? हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया फिलहाल के लिए, और ये जो एक आपके पास कंपोनेंट था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता थी, इसको हमने उठा के यहां पे ले आए। ठीक है, जब भी कोई वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। इट मींस हम क्या करेंगे, अब ये ए बेसिक ये वाला जो वेक्टर है
ए एंड बी इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पता है, बट विद द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये यहाँ प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दीज टू प्लस, सॉरी दीज टू प्लस दीज टू माइनस ए एंड बी, ये एंड बी जो है यहाँ आके माइनस होगी। तो ये अब देखेंगे, ये देखिए ए एंड बी था, इसकी डायरेक्शन जो है हमने क्या कर दी, ऑपोजिट करके इसको ऐड कर दी। ये बेसिकली था रिजल्टेंट, लेकिन चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने बेसिकली अदर साइड पे लेके जाके नेगेटिव डायरेक्शन के साथ ऐड कर दिया इन दीज थ्री वेक्टर्स। ये तीन वेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद हमने ये फोर्थ वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, अभी भी हमें ये वाला वेक्टर नहीं पता और हमें ये वाला वेक्टर नहीं पता। तो हमें ये पता है कि दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है जी, ये रिजल्टेंट ए टी बी, इट मींस ये रिजल्टेंट जो है स्टार्ट कहां से होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्ट कहां से होगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन हमें पता है, ए टी बी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए टी बी इज पी पी। सो हम इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ लाइन पी पी। ये लाइन पी पी हमने ड्रॉ कर, because we know the line of action of this one and we know that this will start from this one which is the tail of the first vector. What about this one? ठीक है, अब इसमें क्या ऐड होना है, इसमें ऐड होना है ए टी बी ए ऐड होना मीन्स जो लास्ट वेक्टर हमने ड्रॉ किया है उसमें एक वेक्टर ऐड होगा विच इज ए टी बी ए, और जिसकी लाइन ऑफ एक्शन हमें पता है दैट इज क्यू क्यू। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली क्यू क्यू। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का, इससे हमारा जो है वो सारे के सारे अननोन फाइंड आउट हो जाएंगे। हमें पता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है दिस वन, सॉरी पोजीशन वेक्टर कह रहा हूँ, ये जो वेक्टर है ए टी बी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंड एट दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज ए टी बी। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है, सिंस दिस वेक्टर इज एडिंग इनटू दिस वेक्टर, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, it will start from this vector, this point, and it will end at this point. ठीक है, so in this way we can find out each and every unknown which are related to the acceleration. तो देखिएगा, so this is what, this is ATBA and this is ATB. Since we have all of these parameters available, हमें ये 6 के 6 जो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के, इनके मैग्नीट्यूड्स भी पता है, इनकी डायरेक्शंस भी पता है। इट मींस नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन व्हिच इज ट्रांजिशनल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक 3 एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक 4। ठीक है जी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक 4 विल इक्वल टू व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ पॉइंट बी डिवाइडेड बाय द लिंक लेंथ व्हिच इज BO4। ठीक है जी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इसका हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सेम इज द केस फॉर अल्फा, फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक 3, तो दैट अल्फा 3 इज इक्वल टू व्हाट, tangential acceleration component of point B with respect to A divided by BA. BA is what? The link length, link 3 की length. So in this way we have alpha 3 and alpha 4 available. So now what we have alpha 3, alpha 4 available. It means we have all the angular accelerations calculated, and we have the acceleration of point B अवेलेबल एंड वी हैव द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए अवेलेबल। ये हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद इज व्हाट, दैट इज द एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी की एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट या फाइंड आउट या लोकेट करनी। ठीक है जी, ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो अगर हमें पॉइंट सी की एक्सेलरेशन निकालनी है, सो दैट विल इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू acceleration of point A plus acceleration of point C with respect to A। ओके, तो इसमें देखिएगा हमारे पास पॉइंट ए का क्या चीज अवेलेबल है, वी हैव ऑल द 4 पैरामीटर्स अवेलेबल। इट मींस वी नो
the directions and magnitudes of two components of AA. Okay, what about ACA? ACA, ठीक है. Since we developed this mechanism, it means we know the length AC. अगर हमें लेंथ AC पता हो तो हम क्या ये नॉर्मल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? Yes, we can, because we know the angular velocity of this link. So the normal component of acceleration is equal to what? That is equal to the magnitude multiplied by square of angular velocity. So since we know omega 3, since we know length AC, so we can easily calculate what? We can easily calculate the normal component of CA, normal component of CA, नॉर्मल एक्सेलरेशन कंपोनेंट सी है. तो ये हम निकाल सकते हैं. इट मींस नॉर्मल कंपोनेंट की डायरेक्शन में हमें पता है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू सी. सो ए एंड सी ए की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम सी टू ए. सो नाउ फॉर ए एंड सी ए व्हाट वी नो बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. व्हाट अबाउट ए सी ए टी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सी ए? ये हमें अभी इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता, बट वी नो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल component of the acceleration. So that is line RR. It means ATCA जो है that will act on line RR. It means we have 4 parameters of ACA available and we have 2 parameters of, oh sorry, we have 4 parameters of AA available and we have 2 out of 4 parameters of ACA available. ठीक है जी. तो इसको अब हम इस पे क्या करेंगे? we can apply the head to tail rule once again. तो देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे. अच्छा, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये बेसिकली क्या है? वी नो बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वन. अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ पे बताई गई है, दैट इज कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ठीक है, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? सी ए का टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. मैग्नीट्यूड किस तरह निकाल सकते हैं? बिकॉज वी नो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिंक. सिंस वी नो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिंक, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट what? We can calculate the magnitude of this one. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ लिंक ए सी, ठीक है, और साइड ए सी मल्टीप्लाई बाय अल्फा 3. ठीक है, तो दिस इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा. इसको यूज करते हुए हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. इट मींस वी नो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स of AA and we know the magnitude and directions of both component of CA. इसमें बस एक पॉइंट ये है कि हमें जो ATCA है इसका लाइन ऑफ एक्शन पता है बट एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता. ठीक है, एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. ठीक है जी, हमें अभी नहीं पता. ये जो एरो नजर आ रहा है ये हमने अभी जो हेड टू टेल रूल देखेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी जस्ट नो कि ये इस लाइन पे एक्ट करेगा एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड the direction of this acceleration of point C. Okay जी. So हमने इसको किस तरह ड्रॉ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ दिस ए वेक्टर. ए वेक्टर ड्रॉ कर लिए. इसमें हमने क्या ऐड करना है? इसमें हमने दो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं ए सी ए के. इट कैन बी इन एनी ऑर्डर. ये डिपेंड ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप टेंजेंशियल कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लेकिन जनरली हम पहले कौन सा ड्रॉ करते हैं? जिसकी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो, तो दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट. सो हम क्या करेंगे? ए में ए सी ए का नॉर्मल कंपोनेंट ऐड करेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव दिस वन अवेलेबल. अच्छा, इसमें अब हमने ऐड क्या करना है? अब इसमें हमने ऐड करना है टेंजेंशियल कंपोनेंट सी ए. तो वो बेसिकली उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन पता, हमें लाइन ऑफ एक्शन पता विच इज आर 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 आर. ठीक है जी. सो ये आर आर पता है. इट मींस ये जो वेक्टर है इट विल डायरेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. क्योंकि अगर हम इसको यहां से नीचे ड्रॉ करें सो देर इज नो वे कि हम इस डायग्राम को क्लोज कर सकें. ठीक है, तो दी ओनली पॉसिबल वे इज टू ड्रॉ दिस वेक्टर अपवर्ड. तो जब हमारे पास ये तीनों वेक्टर्स ऐड हो गए हैं टू टेल रूल, तो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ द लास्ट. So in this way we can have the magnitude as well as direction of
एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट सी। इसका मतलब क्या है ये कि हमारे पास ये जो चीज है, ये जो लिंक है, इसकी डायरेक्शन दैट इज बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसको अपवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम के लिहाज से देखें तो दिस इज द ओनली वे आउट, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अपवर्ड ड्रॉ किया।